Hello and welcome to Wandering Soul, to yet another video of mine which I am shooting in an early morning, rather a foggy morning of early December. So you guys know why we are here or what is this video all about, and आपके पास चॉइस है कि आप इस वीडियो को देख के भी अनदेखा कर दो और सुन के भी अनसुना कर दो. But that would be like kind of funny अगर आप सुन के अनसुना कर दो, because you would have already read what this video is all about. Ever since I came back from my Iron Butt ride which I did on 5th of November, I was having a problem. मेरे कान में ना वही whistling sound हो रहा था. मैंने सोचा कि कुछ ही दिन में वो चला जाएगा, but it didn't go away. And after about week 10 days of having that whistling sound in my left ear, to be precise, I had to visit an ENT doctor. On 5th of November, I did a really long ride for 24 hours, and there's a lot of wind noise that happens in the helmet. Now what I realized is that after I came back, there is this noise in this left ear, which is like as I'm talking to you, I can hear this sound over here. तो ये मेरा नॉइज किस लिए मुझे लगता है ये लॉन्ग टर्म जो आपकी साउंड है उसने आपकी थोड़ा ईयर को डैमेज किया हुआ है. अच्छा. लंबे समय में जो कंटिन्यूस साउंड आ रही थी आपके कान में, दिस माइट बी द कॉज फॉर दैट. The ideal sound level is somewhere around 55 to 60 decibels for our ears. But while riding in speed in excess of 80 kilometers, the levels go beyond 75. And over a prolonged period of time, if you are exposed to that levels, it is quite certain that it will cause damage to our ears. So, मैंने सोचा while I am undergoing the treatment, while I am taking the precautions और जो भी कुछ करना है I am doing, why don't I share with you what it is all about, क्यों होता है ये wind noise in our helmet, and how can we take care of it. Let's look at noise होता क्यों है और किन किन वजह से noise होता है. So the first noise is from the tires. ये जो wheels, जो टायर जो हिट कर रहे टरबैक को, the noise of that. The second noise that comes to our helmet is basically from the engine. ये जो engine है यहाँ इसका जो एक rumbling sound होता है या silencer का जो sound होता है, that's what comes. The third reason is the traffic. ये जो सामने गाड़ियाँ जा रही हैं, आसपास जितनी गाड़ियाँ हैं उनका हॉन्किंग. तो ये हो गया हमारा पहला कैटेगरी. द सेकंड एंड द इरिटेटिंग पार्ट ऑफ द नॉइज इज एक्चुअली कॉज्ड बाय द विंड बफेटिंग. विंड बफेटिंग का नॉइज़ होता कैसे है आपको यहाँ पर अभी दिख ही रहा होगा कि इवन दो दिस पर्टिकुलर फ्लैग इज़ बिहाइंड द विंडशील्ड, स्टिल द वे इट इज़ फ्लटरिंग ओवर हियर. ठीक है, आपको पता चल रहा होगा कि इस एरिया में भी कितना ज़्यादा विंड है और ये क्यों है. आई विल एक्सप्लेन दैट. विंड चिल होने के बावजूद हाउ कैन यू हैव द विंड बफेटिंग नॉइज? आंसर इज वेरी सिंपल. The wind hits over here and this is how it goes. It is supposed to go on top of my helmet. Well, it does work that way. Wind ऊपर से भी जा रहा है, नीचे से भी जा रहा है. But then there is a bad air which is trapped in between the windshield and the rider's body. Basically windshield और मेरे body के बीच में जो है, that is the bad air. And because there is so much of air flowing in high speed, वहाँ पर एक turbulence बन जाता है. The area which is kind of on top of your tank area, वहाँ पर एक turbulence बन जाता है. And that turbulent air actually gets into your helmet and causes that wind buffeting noise which is around this area. So let me just tell you what all you could do to kind of avoid all this sound that happens inside your helmet. जो इतना ज़ोर का जो आवाज़ होता है विंड बफेटिंग का, जो पूरे कान को बिल्कुल बर्बाद कर देता है. व्हाट ऑल यू कैन डू. इसके बहुत सारे उपाय हैं. कुछ महंगे वाले उपाय हैं और कुछ सस्ता सुंदर टिकाऊ वाले उपाय हैं. सो लेट मी शो यू अ फ्यू ऑफ देम. हाँ, थोड़ी चाल में जाइए हेलमेट निकालने के बाद. हाँ, अब कुछ सांस आ रही है. अब ऐसा लग रहा है कि पूरी एम्बिएंट नॉइज़ जो है ना अब मेरे को सुनाई दे रहा है, सब कुछ सुनाई दे रहा है मुझे. वो कह रहा था
अभी तक सब कुछ बंद था। सो मैंने जो कुछ खोला उससे आपको पता चल ही गया होगा व्हाट ऑल आई एम वेयरिंग, एंड दैट एक्चुअली हेल्प्स यू रिड्यूस द नॉइज दैट इज़ हैपनिंग ओवर हियर. So there are multiple solutions that you can implement. So first and foremost, so पहले हेलमेट से शुरू करते हैं. You have multiple options to go for as far as helmet is concerned. But before you go for the helmet, or before you go for those, really soundproof kind of helmets, what is important is you need to buy the right kind of helmet. अब helmet खरीदने का भी एक तरीका है. There are certain things that you need to bear in mind while you're buying your helmet. In case आपने मेरा एक वीडियो which I had made specifically on how to buy helmets or what all are the things you need to consider while you're buying the helmets, here are link. I am sharing it with you. Do have a look at it. So I'm assuming that you have got a good helmet, but then a good helmet that you would buy, when I say good helmet, I'm talking about a good brand which has got a very good cushioning around and which also has a very nice snug fit. And also remember, I am not referring to open face, I am only referring to full face helmet. पूरा covered है, जब भी obviously आपका wind noise उसमें सबसे ज़्यादा कम होगा. You may have bought the best of the helmet, but not necessarily it will be aerodynamically, उसका aerodynamics ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल सही हो. There are few helmets only out in the market जिसका aerodynamics test हुआ है या they are certified that way, and उसका जो noise level है that is genuinely quite low. Some of the stuff is given over here. You can have a look at it. You can go for it. They are available in India and they come with certain amount of a price tag. Now, yo, by God, गोली के माफिक गई है गाड़ी. तो इमेजिन आप भी अगर इसी स्पीड पे राइड कर रहे हैं और अभी आप हम साइड पे खड़े होकर इतनी आवाज़ आ रही है, इमेजिन हमारे हेलमेट के यहाँ पर कितना ज़्यादा नॉइज़ आ रहा होगा. तो आपको एक मैंने एक्सपेंसिव वाला ऑप्शन तो बता ही दिया कि जब आप हेलमेट खरीदिए. नो, माई हेलमेट इज़ नॉट नेसेसरली एरोडायनेमिकली टेस्टेड. मुझे मालूम नहीं है इसके बारे में, शायद नहीं है, अदरवाइज़ मुझे इतना ज़्यादा इसमें विंड नॉइज़ या विंड बफेटिंग नॉइज़ नहीं आता. So what are the other two jugaads, if I may call it, that you can do? First and foremost, something that you see over here, a simple scarf. Put a scarf around your neck. इससे क्या होता है, जो मैंने आपको बोला कि जो wind buffeting noise होता है वो actually air यहाँ से अंदर जाता है. तो ये जो यहाँ से जो अंदर जाता है, ये scarf की वजह से वो turbulent air जो होता है, एक kind of it disturbs the turbulence, breaks the turbulence. एयर उस हद तक अंदर नहीं जा पाता है एंड इट रिड्यूसेस द नॉइज. So that is one thing that you can do. Second thing, which I think you should always do, even if you are riding at a slightly lower speed, is always wear a balaclava. Because balaclava, like a scarf, well, इतना मोटा तो होता नहीं है, but it kind of covers your ears and comes all the way till your neck. So that also helps. But then there is something which drastically reduces the noise. Okay, and this is something which is recommended by doctors and other experts as well. And it is something as basic as an earbud. अब जबकि मैंने ईयरबड लगा लिया है, मुझे अपनी आवाज़ और अच्छी तरह सुनाई दे रही है, और इधर से जितनी ये गाड़ियाँ जा रही हैं, ये आवाज़ अब मेरे को डिस्टर्ब नहीं कर रही. इट इज़ नॉट हर्टिंग और गेटिंग इनटू माय ईयर. सो ईयरबड्स जो मैं बोल रहा हूँ, दीज आर द सिलिकन ईयरबड्स. Now why I am saying silicon, because it takes the shape of your ear. यहाँ पर जो जिस होल की ईयर होल के अंदर जो हमें डालना पड़ता है इसको, it actually takes the shape of a ear. One very important thing that happens over here, or why I recommend these things, the silicon earbuds, is it cuts off the bad frequency or the bad noise. इसको लगाने के बाद आप अगर फ़ोन पे भी बात करना चाहो, आप बिल्कुल बात कर सकते हो. आप अगर किसी से बात भी करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. हाँ, वॉल्यूम थोड़ा सा कम होगा, बट यू विल बी एबल टू होल्ड ए कन्वर्सेशन, यू विल बी एबल टू टॉक. सो ईयरबड्स, और वो कितने के आते हैं? दीज ईयरबड्स स्टार्ट्स एज लो एज $150 एंड आई थिंक शायद 1000 रुपीज़ तक जाता है. आपका जो भी बजट शूट करता है, यू कैन जस्ट गो फॉर इट. द वन दैट आई यूज, ट्रैंक्विल वाले, आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर द लास्ट couple of weeks, ever since I visited the doctor, and they have been performing really, really well.
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? Do you think there are some other aspects that should have been covered in this particular video regarding the wind buffeting noise? If you have any feedback, do share in the comment section down below. I would love to hear from you. And if you're on my channel for the first time and you have not yet subscribed to my channel, do click onto the subscribe button and also click onto the bell icon so that you are notified when I post my next video. So आज के लिए इतना ही है. Till we meet again with yet another video on biking, riding and the places that I'm going to wander around. Till then, you be safe, you ride safe. Bye.